Okay. It's a great afternoon actually. Fine. So today we'll start the fourth number assignment, that is very important, sorting. Okay. So we have to implement the program in Python. The problem statement is to store first year percentage of students in array. Means we have to use the array data structure here. Write a function for sorting array of floating point numbers in ascending order using, we have to use the two techniques here, bubble sort and selection sort. Okay. So I hope everyone clear the concept of bubble sorting. Okay. Again, I'm showing one video of it for bubble sorting. Okay, so that you can clear the concept of bubble sort as also. These points already explained by sir, right? Consider that we want to sort the students by their heights in increasing order. The heights in centimeters are as follows. In this method, first the 0th element is compared with the first element. Here it is 170 centimeters and 160 centimeters. As 170 centimeters is greater than 160 centimeters, they are interchanged. Then first element is compared with the second element, that is 170 centimeters and 180 centimeters are compared. But they are not swapped as they are in the proper position. Next, 180 centimeters and 155 centimeters are compared and are interchanged. Then 180 centimeters and 150 centimeters are compared and interchanged. This is the first iteration of bubble sort. Okay. So here everyone is clear how the first step will do. This is the first pass. Okay. So what will happen in this case? First number is compared with second number position. If it is first is greater than second, then it will start, right? Then just concentrate one. If you are talking about 170 into and 160, okay. So 160 is smaller than 170, so we need to start here. So वो swapping हो जाएगा. So वो 160 is in 0th position and 117 first position. Okay. Likewise, again we need to check next two. Okay. So 170 and comparing with 180. Okay. Again we'll check 170 is smaller. That's why it's not necessary to do the swapping. Next one 155, then 180. Here is again we need to check. 150 is smaller. 180 is greater. So no need. Next comparison will be last location तक हम लोग जा रहे हैं. That is 150 and 180. So 150 is smaller than 180. So finish. There is no need to exchange. Okay. So this is our first pass. Last location में हम लोग जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा first pass खत्म हो गया. और अभी हमारा क्या होगा? Next pass start होगा. Means we are comparing first number with second, second number with third, third number with fourth. Likewise. So here is bubbles were created. Okay. यहाँ पे क्या हो रहा है? Bubbles create हो रहा है. We are talking about this one. इस वजह से हम लोग सोचेंगे तो bubbles जैसे हम लोग sorting कर रहे हैं. That's why this technique is called as a bubble sort. Okay. Fine, everyone. So I hope everyone clear the step 1. So now we'll focus on step 2. As you can see, after first iteration, the largest number is bubbled out at the last position. In the next iteration, all the elements except the last one are compared. Here, 160 centimeters and 170 centimeters are compared, but they are not exchanged. Then 170 centimeters is swapped with 155 centimeters and 150 centimeters. Thus, 170 centimeters is placed at second last position. Now, in the third iteration, 160 centimeters is compared with 155 centimeters and 150 centimeters. Thus, they are exchanged. And 160 centimeters is placed at its proper position. Then, in the fourth iteration, 155 centimeters and 150 centimeters are swapped and placed at their proper position.
Thus, we have sorted the students according to their heights. Observe that we require n-1 iterations for n elements in bubble sort. The time complexity of bubble sort is O of n square. Next is insertion sort. To understand this, let's sort the students by their weights. Okay, so I hope clear now the concept of what bubble sort is. Okay, students concentrate on this part, that is the which part I am talking about, the theoretical part. Theoretical part technically कैसे execution होगा ये आपको clear हो जाएगा, तो no doubt आप लोगों को इसका इशू नहीं आएगा, और इम्प्लीमेंटेशन पर्पज इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, इफ आई एम टेकिंग द 5 एलिमेंट्स हियर, दिस इज द इंडेक्स. इसको मैं क्या बोलती हूँ, दिस इज अवर इंडेक्स. ये मैंने क्या लिए है, इंडेक्स लिए, मतलब मैंने एरे में क्या किया है, आई एम स्टोरिंग द एलिमेंट इनटू द एरे मैप. ओके, so here is the array is given. For example, I am taking the name of array here, that is ARR. ओके, इसमें मैंने क्या किया है, ये सारे एलिमेंट स्टोर किए हैं. ओके, सो ऊपर की जो एलिमेंट है दैट इज योर इंडेक्स, और ये एरे में मैं क्या कर रही हूँ, एलिमेंट स्टोर कर रही हूँ. लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट है मेरा 5. आई एम टेकिंग द 5, देन 4, देन 3, then 2, then why it is called as bubble sort. I hope everyone clear this. It creates the bubble, means first number compare with second, second compare with third, third compare with fourth. Likewise, bubbles were created. That's why it is called as a bubble sort. Fine. Now here just concentrate. अभी हमें क्या करना है, इसका सॉर्टिंग करना है. ये अपने एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5. एलिमेंट्स कितने हैं, 5. सो नो डाउट नंबर ऑफ पासेस कितने हो गए, number of passes 4 equal to that is, if I am talking about the n equal to 5, means number of passes equal to n minus 1 equal to 4. Always remember that last step में हमारा आंसर आना ही चाहिए. Suppose I am starting here step 1. Okay, step 1 में क्या हो रहा है, first we are comparing with the first number, compare 5 is compared with 2. Okay, just check here फर्स्ट इटरेशन. सपोज मेरे स्टेप 1 में क्या है, 5 4 3 2 1, ये मेरे एलिमेंट है. ओके, अभी मुझे क्या चेक करना है, वेदर दिस फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड. यस, द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, सो आई नीड टू डू द नीड स्वैपिंग हियर. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं. स्वैपिंग मीन्स वी हैव सीन दैट एग्जांपल, that is tomato and mango. Never forget this point. Okay, we have to do the swapping for temporary variable, लेके उसको क्या करना पड़ता है, स्वैपिंग करना पड़ता है. ओके फाइन. सो अभी 5 ग्रेटर देन 4 है, तो क्या आएगा, स्टेप 5 देन सॉरी 4, 5 की जगह पे 5 4 देन 3 देन 2 देन 1. ओके, आई होप एवरीवन क्लियर दिस. ओके, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या चल रहा है, ये दोनों नंबर कंपेयर हो गए. नेक्स्ट इटरेशन में हमने देखा दिस 2 नंबर वी नीड टू चेक, जो कि 1 and 2 लोकेशन में. जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, दिस 5 इज व्हाट, अगेन ग्रेटर देन होम, किससे ग्रेटेस्ट है ये 5, greater than 3, right? Again we need to check this 5 is greater than 3, so we need to do the swapping here. So next step में क्या होगा, again we have to do the next step here, that is 4 then 5 sorry then 3 then 5 then क्या आएगा, 2 then 1. okay, likewise we अब तक हमारा स्टेप 1 ही चल रहा है. जब तक लास्ट लोकेशन में प्रॉपर एलिमेंट प्लेस नहीं हो जाता तब तक हमें सॉर्टिंग करनी है. गॉट इट एवरीवन? नाउ जस्ट फोकस ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यस 5 3 ये दोनों भी सॉर्ट हो गए. अभी नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 3 and 2, मींस वी नीड टू चेक दिस 2 एलिमेंट. दिस 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, बट फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, आई नीड टू अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. सो अगेन डू स्वैपिंग, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है सबको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्वैपिंग किया तो क्या आ जाएगा, देन 4 देन 3 देन यस, हमने फिर से 4 5 3 2 1, तो 3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यस देयर इज 2 and 1, राइट. अभी फिर से ये 5 क्या है, ग्रेटर है 2 से, तो क्या होगा, 4 इज हियर 3 इज हियर. फिर से किसमें स्वैपिंग होगा, ये दो एलिमेंट्स में होगा.
मतलब कौन आएगा, 5 की जगह पे 2 आएगा एंड 2 की जगह पे 5 आएगा और ये 1 एज इट इज। आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। समझ में आ रहा है? ये देखो, पहले 4 5 कंपेयर किया, पहले इसमें 5 इज ग्रेटर देन 4, यस स्वैपिंग किया। नेक्स्ट इसमें 5 एंड 3 को कंपेयर किया, 3 इज 5 इज ग्रेटर देन 3, यस इसका स्वैपिंग किया। नेक्स्ट इसमें ये समझ में आया 5 इज ग्रेटर देन अगेन 2, अगेन वी हैव टू डू द स्वैपिंग हियर, फाइन। अगेन नेक्स्ट इसमें हम लोगों को दिखा वो 5 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 आल्सो ग्रेटर देन 1, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन वी हैव टू डू द स्वैपिंग। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? सो वी आर डूइंग द स्वैपिंग हियर, फाइन। तो स्वैपिंग किया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 4 then 3 then 2 then 1 and 5। just concentrate, हम लास्ट लोकेशन के एलिमेंट तक गए हैं और नो डाउट जस्ट ऑब्जर्व द स्टेप 1 आउटपुट। ये जो हमारा है स्टेप 1 का आउटपुट था ये सब, ओके दिस इज व्हाट स्टेप 1 आउटपुट, राइट। तो इसमें जो लास्ट लोकेशन में जो एलिमेंट होता है, मतलब लास्ट लोकेशन में प्रॉपर एलिमेंट प्लेस हो जाता है बबल सॉर्ट में। इसका मतलब है हमें किसमें सॉर्टिंग लगाना है, ये 4 एलिमेंट के ऊपर। मतलब अभी से हमारा क्या होगा, स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा। आई होप एवरीवन क्लियर दिस। नाउ विल स्टार्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में देखो दैट इज 4 then 3 then 2 1 and 5। again we'll check this 4 is greater than 3, yes, so again we have to do the swapping। तो क्या आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 4 then 2 then 1 then 5, okay। again we'll check again in second step 4 again greater than 2, yes, so again we will do the swapping। क्या स्टेप आएगा, then 3 then 4 then 2 then 4 then 1 and then 5। now check here the next step, that is again we have to check again this 4 is greater than 1, yes, again we'll do the stepping here। next step में क्या आएगा, 3 then 2 then 1 then 4 and then 5। just concentrate, सेकेंड लास्ट लोकेशन का जो एलिमेंट है वो भी प्रॉपर प्लेस पे चला गया, मतलब दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या होगा अभी, व्हाट अबाउट स्टेप 3, स्टेप 3 इक्वल टू व्हाट इज स्टेप 3 नाउ, यस एनीबॉडी, स्टेप 3 क्या होगा, फिर से ये तीनों एलिमेंट में फिर से हमें चेक करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग।